Hello students, good morning. This is Satish Divedi dears. My all dear students of class 11th, I welcome you all for your new subject. I mean to say new subject because it's always new. Physical education is always interesting and pleasing to make all students happy and interesting. That's why I called it as a new subject. So dear, but I think you have already studied of this subject in your previous class 10th. But once again, I'm going to make your ways towards the physical education, and I hope and think this time you will meet something new because in your previous class 10th you have studied the basic things and basic plot and notions and ideas about physical education, but this time you will going to meet a little broad. I spreading branches of physical education, that's why I called it as a new one. So dears, I welcome you all to physical education. Before going to the chapter, I want to explain you guys that our physical education. First, we should have a question about physical education, and the very first question is, what is physical education? What is the importance of physical education in our life, and does it exist in our past, or it's just a newborn subject to all? These are the questions, dears. Rethink over. We should rethink over these. So dear, I want to explain and interpret the answers of this question to you all guys. What I think and what the scholars say about the physical education is, this is not new one subject and thing or material to new era. The root of this subject was existing since last days, since ancient days. No matter at that time, the sense and thought and ideas towards physical education were differ, or little, not little, much more differ from new era, new modern age. But it doesn't mean at that time it was not so, and it was not there. It was at that time also, and not a list and not a little texture and not little form. At that time it was thought as the greatest thing, as the greatest performance, and as the greatest feature in societies, in ancient societies. As in the very first, the concept of physical education is not new. In fact, physical education has its roots in the ancient period. So we can say now the first question God did answer that physical education is not new. Physical education is ancient thing that is coming and that is going and that is journeying side by side, that is traveling side by side with the time. So we can say once again, we are going to meet, we are going to attend, we are going to learn the thing that is existing since ancient era, ancient times. Okay, dears? And now the matter comes for the sense and differences of physical education. This time I am going to just making contraction and contrast between the ancient physical education and modern physical education. This time I am going to make comparison between that era and this era. So, dears, in that era, physical education was the part of victory. Physical education was the part of honor. Physical education was a part of a he-man.
and manhood. In ancient era, physical education was used as not as now it is. In past era, it was used as physical activities. It was thought as an integrated part of a brave man, heroes. It was the task of heroes, brave man. It was thought as a bravery, and it was related to the manhood, not women. It was thought as honor for a man who was strong, who was brave, who was good in activities of physical. And now the term has lost its meaning of its ancient era. Now the term is same, but the meaning is changed. Nowadays, physical activities is blended with physical education. In that era, it was thought that physical activity was persons who are physically strong, who are able to do those jobs. But now the sense and meaning of physical activity is changed, and it joined with a permanent daily routine of human being, of part of societies, persons and personals and students. In those era, it was not compulsory and it was not a part of study. But nowadays, in modern era, it is compulsory part of study. So dears, let us move ahead little. Its meaning was different to different people. The term physical education is indeed complex and broad-based. Once again, physical education is indeed complex. The term, thought, motto, meaning, subject of physical education is indeed complex, means to say not basically interpreted and clearly interpreted. That's why it is complex and broad based in a wide range. The meaning and thought and notions of physical education is not a limit but wide range. In not a limit range but wide range. It has expansion range. It has a great expansive range of its own meaning. It includes many types of phenomena. Phenomena means physical or mental activities. That is called phenomena. So it included much more activities, including both physical and mental. In the beginning, physical education was used in the term of physical activities. In ancient era, as I taught you in the starting and beginning, in ancient era, it was not a physical education; it was a physical activity. But because physical education was essential for people to survive. Ancient people thought that if they want to live, because at that time they were living in tribes, and often they have to meet many more conflicts and fights between the different type of tribes. So, in the sense of those people, if you want to be survive, if you want to be live, and if you want to be alive on this earth, you will have to fight to the others. And to meet the fight and to get victory over your enemy, you must have physical stamina, physical power. And for physical power, you will have go to physical activity. That's why ancient people used to think that you will have to physical activities to be survived on this earth. Physical education survived, but the main stress on physical education was laid down in ancient Greece. And
what about ancient Greece? Ancient Greece, who were able to do different type of tasks, hard tasks, are called, are called heroes. As I think you may have heard that Herculean task, it's not a Herculean task. Herculean is the man, Herculean is the deity, Herculean is the god of ancient era, ancient Greece, who was able to do any type of job without feeling any type of sadness and harassment and pain, just like Hanumanji. So, in the sense of those people, physical activities was the reference, was the sense, was the, you can say, victory of strong and brave people. So, philosophers like Socrates, Aristotle, and Plato were of the opinion that physical training is a must for youth. And day by day, it was not only physical activities for the people, common people. Scholars were also in the support of physical activities, as they say often that physical activities it should be for all young men. They must be included in physical activity to be survive, to get good stamina for the future, because they thought that physical activity is a way to make the body fit, and fitness is the way to be happy. That's why this was supported, they were supporting to physical activity for all youth. Ancient time, part of life ancient time, and physical training is must for youth. Even in India, physical activity were the essential part of life in ancient times. And in India also, just go for the sagas, hermits and saints of ancient era. Just think about Vishwamitra, just think about Dronacharya, just think about Bhima, just think about Arjuna, and just think about Duryodhana, and so many heroes of our Indian histories and mythologies. They were full of, and they were great of physical stamina, and by the physical activity they got. For physical activity and for to get good knowledge and good physical stamina, they were used to go to the Gurukula Ashrama, join their schools to learn knowledge and to achieve knowledge about the physical activity and physical stamina. The meaning of physical education changed many times during various civilizations, and time the meaning and sense of physical education got changed. Generally, it has been misunderstood. Someone was of view that physical education is whatever physical educators do. Some thought that physical education is only what physical educators do. Means to say, some people thought that physical education is not important and is not wide range. They thought that physical education is only thing that our educators or instructors tell us, make do to us, but not. It's not so. Sometimes it was confused with physical training, play, games, physical culture, health, education, and recreation. But as a matter of fact, it is more than these terms. Some people, in the sense of some people, they think that physical education is not any other thing rather than physical training, play, games, physical culture, health, education, and recreation. But it's not true and not fact what they think. Physical education is something more than that they think of. The physical education had wide range, wide opinion, and limitless, unbounded views and notions.
You can say physical education is the thing that you can't make apart from the human life. Physical education is a thing that is blended up with the human life. It is an important part of a human life, physical education. But the matter is, we should know what this is. We should learn what this is. And this is physical education. So dears, हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन पे। फिजिकल एजुकेशन में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि फिजिकल एजुकेशन है क्या, फिजिकल एजुकेशन का महत्व क्या है और हमें फिजिकल एजुकेशन क्यों पढ़ना चाहिए। तो एक बार फिर से आपको एक नया विषय मेरे कहने का मतलब ये डियर कि फिजिकल एजुकेशन कभी पुराना नहीं होता, ये हर समय नया है। अगर आपके पास इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है, आपका पसंदीदा है, तो आपको हर समय नया मिलेगा। इसमें हर समय आपको नई चीज़ें मिलेंगी और ये हर समय नया भी तो हो रहा है, क्योंकि आप अगर प्राचीन समय की बात करेंगे तो फिजिकल एजुकेशन को फिजिकल एजुकेशन नहीं कहा जाता था। फिजिकल एजुकेशन को फिजिकल एक्टिविटी के रूप में देखा जाता था, यानी शारीरिक क्रियाएं, अभ्यास करना, कुश्ती करना, दौड़ना, दंड करना, योगा करना, शरीर की स्टेमिना को, शरीर की ऊर्जा को, शरीर की ताकत को बढ़ाना, सहने की क्षमता को बढ़ाना, ये सब सारे पार्ट होते थे फिजिकल एक्टिविटी के प्राचीन समय में। और ग्रीस में फिजिकल एजुकेशन, सच ये था कि फिजिकल एजुकेशन अगर बात की जाए फिजिकल एक्टिविटी की तो इसकी एक तरह से स्टार्टिंग ग्रीस से मानी जाती है। हरकुलिस ज्यूस जो वहाँ के डेटी थे, देवता थे, गॉड थे, उनके माध्यम से शुरू हुई थी ग्रीस से ये कहानी शुरू हुई फिजिकल एजुकेशन की स्पेशल। और बाकी फिजिकल एजुकेशन केवल ग्रीस से नहीं है, हमारे हिंदुस्तान के पुराने हीरोज़ को ले लीजिए तो उसमें जो सैगाज साधु संत होते थे, महात्मा होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वे भी शारीरिक अभ्यास पे जोर दिया करते थे। जिस तरह से आप गुरु विश्वामित्र को ले लीजिए, उनके आश्रम में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को योग क्रियाएँ कराई जाती थी, फिजिकल एक्टिविटीज़ कराया जाता था। गुरु सांदीपनी के आश्रम में ले लीजिए आप, कृष्ण भगवान के साथ साथ उनके सारे सखाओं को शारीरिक और मानसिक दीक्षा दी जाती थी। और द्रोणाचार्य को ले लीजिए, उनके जो शिष्य कौरव पांडव थे वो फिजिकली और मेंटली दोनों अभ्यास यौगिक क्रियाएं किया करते थे। तो इस तरह से डियर जो फिजिकल एजुकेशन या आप कह सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी है या फिजिकल प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, शारीरिक मापदंड है, उससे रिलेटेड सारी प्रक्रियाएं प्राचीन समय से ही अपने अस्तित्व में थीं। लेकिन समय के साथ ये हर समय नई होती गई, समय के साथ लोगों की विचारधाराएं बदलती गई, इस पे नए नए विचार आने लगे, अलग अलग नोशंस आने लगे, इसीलिए मैंने इसको न्यू कहा, नया कहा। तो और आप इसको ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ भी चुके होंगे फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो एक बार फिर से एक नए अध्याय की तरफ, एक नई सोच की तरफ और एक नए विषय की तरफ हम बढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन को, और जिसका पहला चैप्टर है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर्स इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि आज के संदर्भ में फिजिकल एजुकेशन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और इसमें बदलाव क्या आ रहा है और इससे एक छात्र के कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब सारी चीज़ों को हम फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। सो डियर्स, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो एंशिएंट ग्रीस से रिलेटेड विद्वान थे वो लोग भी फिजिकल एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। उसमें सोक्रेटिस थे, सुकरात थे, एरिस्टोटल, अरस्तु थे, प्लेटो थे। ये लोग भी शारीरिक क्रियाओं को, एक्टिविटीज़ को यूथ नौजवानों के लिए महत्वपूर्ण मानते थे और उन्हें सजेस्ट करते थे कि आप सबको भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और अपने अपने जहाँ भी वो लोग अब शिक्षा देते थे, प्रदान करते थे, वहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ चलाया करते थे। और प्लेटो का नाम ही प्लेटो पड़ा था इसलिए कि उनके कंधे बड़े चौड़े थे, प्लेटोस, चौड़े कंधे होना, वाइड शोल्डर्स,
तो उनका नाम प्लेटो पड़ा। वो बड़े ही फिजिकली हेल्दी थे प्लेटो, और एक्सरसाइज किया करते थे, योगा किया करते थे। आप एंशिएंट मंक्स को ले लीजिए, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो भी हैं, उन लोगों को देख लीजिए कि किस तरह से योगा किया करते थे। शाओलिन हजारों साल पहले जो अस्तित्व में था, शाओलिन मार्शल आर्ट्स ये और जूडो कराटे मार्शल आर्ट्स जो हुआ करते थे, तो ये सब सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ के ही पार्ट हुआ करते थे। तो पहले क्या था कि हर जगह अलग अलग था। आज के संदर्भ में और आज के टाइम प्रोस्पेक्ट में सबको एक कर दिया गया है, ज्वाइंट कर दिया गया है। और जो कि उस समय व्यक्तिगत माना जाता था, खुद का शौक माना जाता था, आज उसको अनिवार्य कर दिया गया है कि हर आदमी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए शारीरिक गतिविधियों में। और सिर्फ शारीरिक एक्टिविटीज़ ही न करें, बल्कि उसके बारे में ज्ञान भी रखें, जिसकी वजह से आज का जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक वाइड रेंज सेंस रखता है। इसमें सिर्फ पहले के और आज के फिजिकल एजुकेशन में डिफरेंस ये है कि पहले सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी, उसमें फिजिकल क्रियाविधि होती थी, उससे जुड़ा कोई ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता था, बताया नहीं जाता था। लेकिन आज के डेट में इसको फिजिकल एक्टिविटी के साथ फिजिकल शिक्षा ज्ञान के साथ भी जोड़ दिया गया है। इस संदर्भ में जोड़ दिया गया है कि हम अपने शारीरिक संरचना के बारे में भी अच्छे से जानते रहे। तो आज कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एक विज्ञान है जो कि शारीरिक एक्टिविटी और शारीरिक एजुकेशन दोनों को प्रदान करता है। सो डियर्स, और जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का मतलब कि हमारा जो फिजिकल एडुकेटर है, जो शारीरिक के एक्टिविटीज़ का जो हमारा डायरेक्टर है, मोटिवेटर है, जो हमारा गुरु है, वो जो बता देगा वही फिजिकल एजुकेशन है। ऐसा नहीं है डियर्स, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसके कई पार्ट हैं, कई प्रोस्पेक्ट हैं और कई फैक्टर्स हैं, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग है, प्ले है, गेम्स है। लोग यही कहते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग कर लेना, गेम खेल लेना, फिजिकल कल्चर को जान लेना, हेल्थ एजुकेशन कर लेना, रिक्रिएशन कर लेना, यही सब फिजिकल के पार्ट हैं। बल्कि ऐसा नहीं है डियर्स, इससे भी आगे कुछ और है फिजिकल एजुकेशन। ये बहुत ही ब्रॉड फिनोमेना है, इसको हम शार्ट में नहीं कर सकते, तो इसको शार्टली लेना भी नहीं चाहिए। तो डियर्स, आई होप कि आप हमारा फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा और आप उस व्यू से आगे के चैप्टर्स को लेके चलेंगे। आप इसे केवल एक विषय न समझें, बल्कि आप इसको ये माने कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसको हमें फॉलो करना चाहिए। ये हमें सही, सुव्यवस्थित, सुखी और स्वस्थ जीवन जीने का एक नया आयाम देता है, एक नया तरीका सिखाता है। यही है फिजिकल एजुकेशन। सो डियर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन नेक्स्ट। ओके डियर्स, विश यू ऑल द बेस्ट।